नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी विषयांक पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन कि क्रांतिकारी चंद्रशेखरना बचपणनी वात नानपणनी वात અહીં આપણને પાઠમાં કરેલી છે કે જેમના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન કે જેમનો જન્મ 1918 અને એમનું અવસાન 1987માં થયેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલાં એમનો કવિ પરિચય અને ત્યાર પછી આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ કે પહેલાં લેખકનો પરિચય જોઈએ। તો आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है कि आधुनिक कि जे आजना समयना जे हिंदी काव्यधारा है एमां काव्यना मुख्य कवि अने उपन्यासकार तरीके तेओ खूब ज जाणीता है अने एमनुं प्रदान पण ए बाबते नोंधपात्र जोवा मळे। आपका जन्म 9 मार्च 1911 में कसाई એટલે कुशीनगर में हुआ कि लेखकનો जन्म है 9 मार्च 1911 कसाई के जे कुशीनगर तरीके ओळखवामां आवे छे त्यां थयो हतो। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता कि एनुं नानपणनो कि ज्यारे एमनो जन्म 1911 में थयो त्यारथी 1915 सुधी तेओ लखनऊ में रह्या हता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे कि 15 पछी 1915 पछी तेओ केटलाक समय सुधी श्रीनगर अने जम्मू में रह्या हता। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। लेखके लाहौर नी अंदर एक कॉलेज में BSc नी परीक्षा प्रथम श्रेणी प्रथम क्रमांके प्रथम नंबरे ए पास उत्तीर्ण एटले पास थया हता। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। आम क्रांतिकारी दल एटले जूथ क्रांतिकारी जूथ में एने सक्रिय रीते तेओ भाग लीधो एटले तेमां जोड़ाया, जेना कारणे तेमणे घणीवार जेल में कारागार एटले के एने जेल में पण जवुं पड्युं हतुं। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया कि तेमणे सैनिक अने विशाल भारत विषे लखेलुं पण छे, एनुं संपादन पण एमणे करेलुं जोवा मळे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया कि त्यार पछी तेओ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य अने संस्कृतिना अध्यापक तरीके एमणे पोतानुं कार्य करेलुं जोवा एटले के अध्यापक एटले के प्रोफेसर शिक्षक तरीके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एने भारतीय साहित्य अने संस्कृतिना शिक्षक तरीके पोतानुं कार्य बजावेलुं हतुं। अग्नेयजी विद्रोही व्यक्ति रहते। विद्रोह एटले कोईपण प्रकारनो द्रोह के कोईपण प्रकारनो भेदभाव तेओ करता नहीं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है कि एमने जे कंई साहित्य रच्युं ए कोईपण प्रकारना भेदभाव वगर के एनाथी ज एमने ए साहित्य रचवा प्रत्येनी प्रेरणा मळी। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है कि सौथी महत्वनुं एवं उपन्यास मनातुं होय तो प्रेमचंदनुं गोदान नामनुं उपन्यास छे ते एना पछी आजे अग्नेयजीनुं शेखर एक जीवनी नामनुं उपन्यास छे ए गोदान पछीनुं महत्वपूर्ण होय एवुं मानवामां आवे छे। इसके अतिरिक्त एथी वधारे तेमणे नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे कि एमणे जे शेखर एक जीवनी पछी जे आपणे जोईए नदी के द्वीप अने अपने अपने अजनबी जेवा उपन्यास पण एमणे लखेला जोवा मळे छे।
वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते कि तेओ हिंदी कवितामां प्रयोगवादी एटले के नवा नवा काव्योनी रचना करी अने आंदोलन के प्रवर्तक अने ए समये जे कंई आंदोलनों चालता तो एना विषे पण एमणे लखेलुं जोवा मळे। इन्हें आंगन के पारद्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कृत किया कि अग्निजी द्वारा लखायेलू आंगन के पारद्वार नामनी जे काव्य कृति है एमां एमने साहित्य अकादमीनो एवोर्ड पण इनाम पण मळेलुं। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया कि तेमनुं पुस्तक लखेलुं छे कि कितनी नावों में कितनी बार। ए पुस्तक पर एमने ज्ञानपीठ कि जे ज्ञानपीठ एवोर्ड जे साहित्य क्षेत्रे आपणे आपवामां आवे छे। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण पर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृति। क्या भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण पर, बावरा अहेरी, अरिजो करुणा, प्रभामय आ एमनी मुख्य काव्य कृतिओ जोवा मळे। अने एमणे तार सप्तक का भी संपादन किया कि तार सप्तक पण एमणे लखेलुं जोवा मळे छे। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक कांश कि अहींया आपणने जे पाठ आपवामां आवेलो छे ए पाठ शेखर एक जीवनी भाग एक नामनुं पुस्तक छे तेमांथी लीधेलो जोवा मळे। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया कि आ उपन्यास से 1940 में लेखके लखेलो छे। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चले चंद्रशेखर आजादનું नानपणथी लई अने कॉलेज जीवन सुधीनो एमां एमणे एमनुं जीवन चरित्र लखेलुं छे। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की एक खोज लक्षित कि शेखरનું जे जीवन दर्शन स्वतंत्र देशने आज़ाद कई रीतना करो एना माटेनी शोध माटेनुं एमां लखेलुं जोवा मळे। वह लील पर चलने वाला नहीं कि ते पोताना आश्रय के नसीब पर चालवावाळा व्यक्तिओमां नहोता। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों में से अभिभूत था कि शेखरનું बचपन છે એ क्रांतिकारी विचारोथी अभिभूत क्रांतिकारी विचारोथी ते अनुभवेલું હતું। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक ए शेखर છે એ ब्रिटिश शासनना जबरदस्त विरोधी हता अने स्वदेशी वस्तुओं प्रत्ये खूब ज चाहक हती। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। अंग्रेजी सिवाय हिंदी भाषाना हिमायत એટલે हिंदी શીખવા પ્રત્યે એમને બાળપણથી એમના જીવનનો એક ભાગ હતો એવું આપણને ઉપન્યાસમાં જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग आंदोलन के जेते वखते अंग्रेजोए જ્યારે આપણા દેશ ઉપર કબજો જમાવી લીધેલો હતો એ સમય અસહયોગ આંદોલન ચલાવવામાં આવ્યું કે ભારતીયોને એકબીજા સાથે લડાવવામાં આવ્યા। એટલે કે આવી અસહયોગ આંદોલનની એક લહેર આવી અને લોકો તેમાં એ મુજબ કાર્ય કરવા લાગ્યા। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने बाहों बहाने लगा कि असहयोग के जे अंग्रेजोनी सामे लड़वानी जे लड़त चलाववानी हती शेखर पण एनी सामे लड़वा माटे चेष्टा एनी इच्छा हती पण ज्यारे एनी सामे लड़ी न शक्य केम के अहीं आपणने एना बचपणनी नानपणनी वात करी छे। એટલે જ્યારે તે अंग्रेजों सामे लड़ी न शक्या त्यारे तब हाथों से केकर अपने बहाने लगा અને પછી પોતાની જાતે જે કંઈ પ્રયત્નો થતા હતા એ પ્રમાણે એ દેશને આઝાદ કરવા
કે અંગ્રેજોનો વિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા लाग्या। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। एमने विरोध दर्शाववा माटे शुं कर्युं कि जे कंई विदेशी कपड़ाओ हता ए उतारीने मूकी दीधा। जो दो चार मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे अने पछी आपणा देशमां बनेला जे खादीना कपड़ा आपणे जेमने कहीए छीए एवा बे चार मोटा कपड़ा हता जे पोते पहेरवा लाग्या। बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके कि एने पछी बहार फरवा बजाने मळवानुं छोड़ी दीधुं केम के एनी पासे एटला देसी एटले के आपणा बनावेला कपड़ा नहोता कि जेथी ए पहेरी अने पोते क्यांय बहार जई सके। प्रायः लगभग दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। दोपहर एटले बपोरना समये ए ऊपर के पोतानुं जे मकान छे ए मकानना उपरना रूममां एक खिड़की के बारी पासे जईने ऊभा रही जाता और बाहर से देखा करता अने बारीएथी बारीनी बहार छे ए जोया करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समावेत पुकार उस तक पहुँचती कि क्यारेक घणा दूरथी घणा लोकोने कंठ એટલે અવાજ સંવેત એટલે એકી સાથે કે જ્યારે ઘણા બધાનો અવાજ એકી સાથે સંભળાતો ત્યારે શું સંભળાતો તો કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા। ગાંધીજી કે જે લોકો અંગ્રેજો સામે લડત ચલાવતા હતા એ લોકો એવા નારા લગાડતા હતા શું તો કે ગાંધી કા બોલબાલા ગાંધીજીનું મહત્વ અને દુશ્મન કા મુંહ કાલા કે દુશ્મનનું મોઢું કાળું કે એવા નારા છે એ લગાવતા। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता અને ત્યારે પોતાના प्राण खूब ज आनंदित थई उठता અને પોતે પણ પોતાની ખિડકી જે બારીએ ઊભીને બહાર જોતા તો બારીએથી તેઓ બોલતા શું બોલતા કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા કે ગાંધીજીની બોલબાલા અને દુશ્મનનો મુંહ કાલા આવું તે બોલતા। इससे आगे वह जा नहीं सकता था कि એને બસ ત્યાં ઘરમાં ઊભા રહીને જે વિરોધ દર્શાવી શકાય તે દર્શાવી શકાય પણ તે લોકો સુધી તેઓ પહોંચી શકતા નહોતા। घर से अनुमति नहीं थी कि એને બહાર જવા માટે अनुमति બહાર જવા માટેની મંજૂરી रजा હતી नहीं। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था कि जे अनुमति नहीं एनी ऊपर रहेलो एक अंकुश काबू हतो कि ते बहार जई सके नहीं। जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता कि जे काबू है एटले हमेशा तेने त्यां सुधी पहोंचवानी जे इच्छा है ये हमेशा ए त्यां सुधी पहोंचवानो प्रयत्न करता एने प्रेरित करता। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे कि एमनी माता सिवाय बधा लोको ए घरथी बहार गयेला हता। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी कि एमनी माता है ए ऊपर एमना रूम में कोठे એટલે કે એના रूमना बैठा था। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे खुली जगह में ढेर लगा दिया। शेखरे शू कर्युं तो कि घर में जेटला विदेशी कपड़ा हता बटोरे એટલે કે भेगा कर्या अने एक खुली जगह पर एनो ढगलो ढेर लगा दिया कि एनो ढगलो कर दीधो। फिर लैंपे लाकर उनमें मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। અને પછી એ જે વિદેશી કપડાં હતા એનો ઢગલો કરી અને લેમ્પ એટલે પહેલાંના સમયમાં અત્યારે જેમ આપણે લાઇટો છે એવી લાઇટો નહોતી। લેમ્પ એટલે દીવો કે જે આપણે દીવો કરીએ છીએ એ દીવામાંથી માટીનું તેલ લાવી અને એ કપડા પર ઉડેલા એટલે કપડા ઉપર છાંટી દીધું। અને તેલ શા માટે દીવામાંથી લીધું તો કે એ સમયે જે તેલનો જેમાં સંગ્રહ થતો એ ટીપણાઓ છે એ નોકરોની પાસે રહેતા। જો નોકરો પાસે માગવા જાય તો નોકરોને પૂછે
નોકરો એમને પૂછે કે ભાઈ શું કરવાના જોઈએ છે, એટલે એમની પાસે જવાની હિંમત કરી નહીં. અને પછી એ કપડામાં તેલ છાંટી અને પોતે સળગાવી દે છે, આગ લગાવી દે છે. આગ એકદમ ભભક ઉઠી, એટલે આગ તો એકદમ સળગી ઉઠી. શેખર કા આહલાદ ભી ભભક ઉઠા, અને શેખરને અંદરથી પણ એક અંતરનો આનંદ થવા લાગ્યો. वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा. પછી એ જે કપડાને પર જે ઢગલો કર્યો હતો એને આગ લગાડી અને એની ફરતે નાચવા લાગે છે અને ગલા ખોલકર એટલે કે ઊંચા અવાજે, ગલા ખોલકર એટલે ઊંચા અવાજે એ ગાવા લાગે છે કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા, ગાંધી કા બોલબાલા અને દુશ્મન કા મુંહ કાલા, આવું એવો નારો છે એ લગાડવા લાગે છે. થોડી દેર મેં માँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल मानो विदेशी, એટલે આજે વિદેશી કપડાં સળગાવી દીધા એટલે થોડા જ સમયમાં એમની માતા આવે છે અને થોડા જ સમયમાં જાણે કે એમના ગાલ પણ લાલ થઈ ગયા હોય, એટલે કે વિદેશી હો ગયા, લાલ થઈ ગયા. કેમ કે એની માતાએ પછી કપડાં બારી નાખેલા, મારે તો ખરી જ, એટલે એ માતા એની ગાલ ઉપર એક ઝાપટ મારે છે, એટલે એના ગાલ પણ લાલ થઈ ગયા કે જાણે વિદેશી થઈ ગયા હોય એવું લાગતું હતું. જલને લગે લેકિન ઢેર રાખ હો ગયા, ભલે કપડાં તો સળગી ગયા અને એ કપડાં પણ એનો જે ઢગલો હતો એ પણ બળીને રાખ થઈ ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીનો પાઠ છે એ આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, होमवर्कમાં निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया, कि शेखरे બહાર ફરવાનું અને બધાને મળવાનું શા માટે છોડી દીધું હતું. બીજો પ્રશ્ન, શેખર કે મસ્તિષ્ક મેં કેસી પુકાર પહોંચી, કે શેખર જ્યારે બારીએ ઊભો હતા ત્યારે કેવો અવાજ સંભળાતો હતો એ લખવાનું છે અહીં. ત્રીજું, શેખરને આગ કેસે જલાઈ, કે જે પેલા કપડામાં આગ લગાડી હતી કઈ રીતના સળગાવ્યા હતા એ લખવાનું છે. અને ચોથું, શેખર ગલા ખોલકર ક્યાં ગાને લગા, શેખર એ ઊંચા અવાજે શું ગાવા લાગ્યું હતું. તો આ 4 જ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે. આ 5મા પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો નથી, કેમ કે ત્યાં હજી આપણે પહોંચ્યા નથી. એટલે 4 પ્રશ્નોના જે પ્રશ્નના જવાબ સારા અક્ષરે હોમવર્કમાં લખવાના છે.